Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss class 12th English Flamingo book poem number 5 which is a roadside stand. अगर आपने यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से देख ली तो आपको यह पोएम क्लियर हो जाएगी फॉर योर एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग दी टाइम लेट डिस्कस दी पोएम. सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर इस पोएम के पोएट है कौन. सो द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Robert Frost was a famous American poet of the 20th century. In this poem, he has sympathetically described the lives of poor people. Also, he gives a message to put an end to the pain and hardships suffered by poor people. Now, let's start the line-wise explanation of the poem. The little old house was out with a little new shed in a front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread, but for of the some money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint, the polished traffic pass with the mind ahead, or if ever aside a moment then out of the sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with the end turned wrong and as turned wrong offered for a sale wild berries in a wooden quartz, or a crook-necked golden squash with the silver warts, or a beauty rest in a beautiful mountain scene, you have the money. But if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery would not be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make a roadside stand and ask for some city money to fill in hand, to try if it will not make our being expand and give us to the life of the moving pictures promise that the party in a power is said to be keeping from us. तो यहाँ पर पोएम स्टार्ट हो रही है जिसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एक स्टॉल के बारे में. A small poor farmer has put up the stand outside his house along a highway. वो पुअर फार्मर एक्सपेक्ट कर रहा है पीपल से कि वो रुके और कुछ खरीदे उसकी दुकान से, पर कोई भी पासर स्टॉप नहीं कर रहा है उसकी कार को कि वो ख़रीदे उसकी बेरीज़ को और गोल्डन स्क्वैश को. जो पोएट फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं मीन्स जो कार के ऑनर होते हैं वो हमेशा हरी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं. उन्हें कोई भी केयर नहीं है कि वो रुके स्टॉल पर और उनके स्टॉल से कुछ खरीदे. अगर कोई रुक भी जा रहा है पासर रिच पीपल तो उसे इरिटेटेड फील हो रहा है. जो रिच पीपल होते हैं वो डिनोट करते हैं एक स्टॉल को अगली या अनअट्रैक्टिव स्पॉट की तरह द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में. जो पुअर फार्मर है वो हर्ट हो रहा है उसे इन द वे दैट ही इज ट्रीटेड और इग्नोर्ड. वो तो बस कुछ मनी चाहता है. थर्स यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं उन्हें अपनी मनी को स्टोर नहीं करना चाहिए, उन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए नीड्स पुअर पीपल की. आगे बढ़ते हैं. It is in the news that all these faithful keen are to be bought out and merrifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. Wily great good doors, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at the night the ancient way. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. For the sequel of breaks, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. Just one to inquire what a farmer prices are, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to beg and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of a gas. They couldn't this. Crossly, they had none, didn't it see? No in a country money, the country scale of gain. The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't helping
owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पुअर पीपल को डिनाई कर रही है। वो कहते हैं कि बिजनेसमैन्स जो है वो भी सेल्फिश है और वो हेल्प कर रहे हैं इन पुअर पीपल्स का इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। जो पोएट है बहुत ज़्यादा दुखी पिटी फील कर रहे हैं फॉर पुअर मैन के लिए जो कि एग्रीली वेट कर रहा है कस्टमर के लिए। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी कार नहीं रुक रही, कुछ कार रुक रही है। वन ऑफ देम हैव टू डिज़ायर टू टेक अ यू टर्न, अनदर टू इंक्वायर अबाउट द वे, अनदर टू आस्क इफ़ ही कैन गेट अ पेट्रोल देयर। द पोएट इज़ वेरी सैड एट द प्लाइट ऑफ द पुअर। आगे पोएट कहते हैं कि जो उम्मीद है पुअर विलेजर्स की वो डार्क है और होपलेस है। He says that money is required for a human progress. It must flow from the city to the rural areas. लास्ट में जो पोएट है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग को डैट इन पीपल्स को किल कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू परमानेंट एंड टू देयर प्रॉब्लम्स बिकॉज द पोएट थिंक दैट द फेट ऑफ विलेजर्स इज डार्क एंड होपलेस। फर्दर यहाँ पे जो पोएट है वो विश कर रहे हैं कि अब आगे कोई आएगा और इन पुअर पीपल्स की पेन को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आखिर यह पोएम हमें क्या कंक्लूज़न देना चाहती है। जो पोएम है यहाँ पे वो कन्वे कर रही है डीप मीनिंग ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को हमारी इकोनॉमी में, और ये मैसेज भी दे रही है कि अब हम एंड करें, किसको एंड करें, पेन को और हार्डशिप को जो भी सफ़र करा जा रहा है पुअर पीपल के द्वारा। आई होप कि तुम्हें यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है फॉर योर एग्ज़ाम। अगर नहीं हुई हो तो आप वापस से देखिए वीडियो को, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।